Hello dosto, welcome back to the channel Coding with Swapnil, where we are learning Python from basics to advanced. Also, we are learning all the Python based frameworks and all other programming language. So do subscribe and hit the bell icon. आज हम देखने वाले हैं पाइथन कीवर्ड्स के बारे में। क्या होते हैं पाइथन कीवर्ड्स, कितने पाइथन कीवर्ड्स टोटल है, क्या हम इनका यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में, अगर कर सकते हैं तो कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में। दोस्तों सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज पाइथन कीवर्ड्स। पाइथन कीवर्ड्स आर रिजर्व कीवर्ड्स दैट हैव अ स्पेसिफिक फंक्शन and meaning in the Python programming language. They are used to define a syntax and structure of Python code. अगर आपको Python syntax के बारे में पता नहीं है तो हमने डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, आप जाकर देख सकते हो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। दोस्तों पाइथन में पूरे 33 कीवर्ड्स है, ये नंबर बदलता रहता है, इट्स डिपेंड कि आप कौन सा वर्जन यूज कर रहे हो। दोस्तों चलिए देखते हैं कि आखिर ये 33 कीवर्ड कौन कौन से हैं और इनका फंक्शन क्या है। बेसिकली इन 33 कीवर्ड्स को हम यूज कैसे कर सकते हैं अपने यूज केस के हिसाब से, देखते हैं वन बाय वन। दोस्तों अवर फर्स्ट कीवर्ड इज एंड, जो कि एक लॉजिकल ऑपरेटर की तरह काम करता है, जिसका आउटपुट हमें ट्रू या फॉल्स में मिलता है। अवर सेकंड कीवर्ड इज एज, इट इज यूज्ड टू क्रिएट एन एलियास, जैसे कि आसान भाषा में निकनेम। थर्ड फंक्शन इज एसर्ट, एसर्ट वी यूज फॉर डिबगिंग पर्पस, जैसे कि आपने एक फंक्शन लिखा है और आपके कोड में कुछ बग्स मिले हैं, तो आप जाकर देखते हो कि वेरिएबल में क्या वैल्यू आ रही है, किस लाइन पर आपको क्या क्या डेटा मिल रहा है, ताकि आप बग्स को रिजॉल्व कर सको। दोस्तों फोर्थ कीवर्ड इज ब्रेक। जब भी हमारा कोई लूप चलता है तो उसे रोकने के लिए हम ब्रेक यूज करते हैं। इन शॉर्ट, इफ वी नीड टू स्टॉप द कोड ऑन द पर्टिकुलर कंडीशन, देन वी यूज दिस ब्रेक कीवर्ड। Our next keyword is class. By using class keyword, we can define a class in our program. You can see this on the screen that by using class keyword, I have created one class. Our next keyword is continue. To continue to the next iteration of loop. For example, you can see on the screen. Our next keyword is def. By using def, we can simply create a functions, Python functions. As you can see on the screen as well, I have created one Python functions, one empty Python functions by using the def keyword. Our next keyword is from. From हम तब यूज करते हैं जब हमें स्पेसिफिक पार्ट ऑफ मॉड्यूल इंपोर्ट करना होता है। Now what is module and what is packages? These things we will learn going forward in our series. So next keyword is global. By using global keyword, we can define a global variable which we can use in the whole class, जिसे हम हमारे पूरे क्लास में कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। Our next keyword is if. By using if, we can make a conditional statement in our Python program. Like you can see on the screen, I have written one example for you guys how the conditional statement looks like. We already learned this in our last video. If you did a practice for the syntax and variable, देन आपने भी ये ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए होंगे जो हमने वेरिएबल्स एंड वेरिएबल्स के रूल्स अंडरस्टैंड करने के लिए लास्ट वीडियो में हमने प्रैक्टिस किए थे। अगर आपने वो वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, यू कैन गो एंड चेक आउट दैट। आई पर्सनली रिकमेंड यू टू फर्स्ट वॉच दैट वीडियो बिकॉज इन दैट वी ऑलरेडी एक्सप्लेन व्हाट इज सिंटैक्स, व्हाट इज वेरिएबल, व्हाट आर द रूल्स फॉर वेरिएबल एंड व्हाट इज द यूज ऑफ कमेंट। सो आपको ये पूरा सिंटैक्स तभी समझ आएगा जब आप वीडियो देखोगे, प्रैक्टिस करोगे, देन आपको समझ आएगा कि इफ कंडीशनल क्या होता है। सो लेट्स बैक टू द पॉइंट। आवर नेक्स्ट कीवर्ड इज इंपोर्ट. बाय यूजिंग इंपोर्ट वी कैन इंपोर्ट अ मॉड्यूल इनटू आवर पाइथन फाइल. आवर नेक्स्ट कीवर्ड इज इन. बाय यूजिंग इन कीवर्ड वी कैन चेक इफ आवर conditions or if our value is available in the particular data type or not. For example, you can see on the screen I have written one example. Our next keyword is. To test if two variables are equal or not, we always used is as a comparison operator, you can say. So is work as a comparison operator where we can check the both variable are equal or not. It also return the value as a boolean.
दोस्तों हमारा नेक्स्ट कीवर्ड है लैम्बडा. बाय यूजिंग लैम्बडा we can create an anonymous function. We can pass any number as an argument in the lambda function but can only pass one value as an argument. Next keyword is none. Name itself speak it represent a null value, means empty value. If you face the none type error, that means you are getting empty data. We'll see going forward what will be the none type and how will you overcome this none type when we do a practice on the Python function, and also we'll take an example on classes, Python classes, object and other OOPS concept as well. तो उस समय हम none type को कैसे remove करना है, none type को कैसे solve करना है वो भी हम देखेंगे. तब तक के लिए just remember none type means you are getting empty data. Our next keyword is non-local. To declare a non-local variable, we use non-local keyword. Our next keyword is not and or. These keywords we use as a logical operator. We already seen what is a logical operator. So basically that gives the boolean value as a return. Our next keyword is pass. Using pass keyword, we can create the empty functions, null statement that will do nothing. So for example, you can see on the screen I have created empty function and empty class as well by using the pass keyword. Our next keyword is raise. We use this in exception handling to raise an exception. Our next keyword is return. We use return keyword to exit a functions and return a value. We'll see going forward how to use return in our method. So as of now, just keep that we can use a return keyword to exit a function and return a value. Our next keyword is true. True एक comparison operator की तरह काम करता है जो कि boolean value return करता है as a output. Our next keyword is try. We use try keyword to catch the error or to make try and except block, to make try and except statement. Our next keyword is while. We can use this keyword to create an while loop. You can see the example on the screen. I have created one while loop by using while keyword. Our next keyword is with. Using with keyword, we can simply simplify our exception handling. Our next keyword is yield, which is our last keyword. And we can use the yield keyword when we want to return a list of value from a generator. So now if you are thinking what is a generator, so going forward we will learn generator, iterators and this kind of thing in the OOPS concept as well. So don't worry about what is generator and what is iterator and all. So I hope guys you understand the working of all the keywords. If you understand the working of all the keywords, you know that which keywords when we need to use in our Python program, in our logic as well. So thank you so much for watching the video दोस्तों. मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक हैप्पी कोडिंग.